Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-Level Physics 5054 for May June 2022 Paper 2 Variant 2. Before starting मैं आपको आपके एग्जाम के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा. The changes we've had in your exam and आपके एग्जाम के बारे में crucial information that every बच्चा should know. And about our topical papers which is a very convenient way to learn. फर्स्टली अबाउट योर एग्जाम. आपके एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. पहले 75 होते थे, अब 80 मार्क्स हो चुके हैं. ठीक है ना. तो वेटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है. एंड सेक्शन बी हैज बीन रिमूव्ड. दिस इज द मेजर चेंज इन योर एग्जाम. पहले आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होते थे, ईच 15 मार्क्स. और उन 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस करने होते थे. लेकिन अब सेक्शन बी रिमूव हो गया है. और आपके पास जो प्रिविलेज होती थी दैट यू कैन लीव अ क्वेश्चन, वो भी रिमूव हो चुकी है. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है ना. और आपके एग्जाम के अंदर ऐसे शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे जिनके शॉर्ट आंसर्स होंगे. एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. जो मैंने स्पेसिमेन पेपर देखा था उसमें तो 10 क्वेश्चन थे. तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड दैट. एनीवेज, आपके एग्जाम के लिए 1 hour and 45 minutes दिए जाएंगे इन विच यू हैव टू डू ऑल ऑफ द पेपर. ठीक है. Anyways, moving on to our topical passivers. हमारे topical passivers are like they're very good for any traditional purpose. जैसे अगर आपने सिर्फ topical passivers solve करने हैं, you can buy our topical passivers for that as well. But the edge we have over other topical passivers like red spot or you can say रीड एंड राइटर्स, ये हमारे पास पेपर्स के साथ एक क्यूआर कोड आता है. ठीक है ना. जैसे ये क्यूआर कोड है, और अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे वो क्यूआर कोड आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट पे ले आएगा. और ये प्लेलिस्ट आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना सिखाएगा. जैसे अगर आपने रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर ले लिया और अगर आपको रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो यू कैन सिंपली गो टू योर क्यूआर कोड गिवन फॉर दैट पेपर और यू कैन से गिवन फॉर दैट टॉपिक. और अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट. और उस प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया होगा. जैसे आप देख सकते हैं इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में 14 वीडियोस हैं इन विच वी शो हाउ टू डू एवरी सिंगल क्वेश्चन. ठीक है ना. हर चैप्टर के शुरू में एक क्यूआर कोड दिया जाएगा फॉर दैट स्पेसिफिक चैप्टर. सो होप यू गेट द पॉइंट एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर पेपर. क्वेश्चन 1. Figure 1.1 shows a water skier pulled horizontally across the water surface. The mass of the water skier is 60 kilograms. The gravitational strength G is 10 newtons per kilogram. Calculate the weight of the water skier. The weight of the water skier will be calculated using the formula W is equals to mg. मतलब W is equals to mass into gravitational field strength. तो हमें W निकालना है तो हमारे पास M कितना है. That will be 60 and G हमारे पास कितना है 10. तो W will be equal to 600 newtons of course. So yeah. आगे चलते हैं. Mass and weight have different units. State two other differences between mass and weight. Mass का हमारे पास यूनिट क्या होता है. Mass का यूनिट is kilograms while weight का यूनिट is newtons. Now first of all, if that's out of the way, let's go into further differences. So mass is a vector quantity. Weight W is a scalar quantity. Vector and scalar में difference क्या होता है? That vector quantities do not have a direction while the scalar quantities do. ठीक है ना. Weight के पास एक डायरेक्शन होती है. Weight is a scalar quantity. So yeah, that is one difference. जो mass होता है that is the amount of matter in an object. Mass is the amount of matter in an object. ठीक है ना. You can write that. Mass is the amount of matter in an object or it is measured in kilograms. ये हो गया. And another fun fact that 1 kilograms of mass will be the same on Earth and the Moon. So you have to keep that in mind. K 1 kilograms of mass will be the same
on the earth and the moon, जो mass होता है ना, that does not change anywhere in the universe. The mass will stay constant. ठीक है ना? Because it is the amount of matter in an object, and the matter does not change wherever it goes. ठीक है ना? On the other hand, जो weight होता है, weight is the force exerted by that ऑब्जेक्ट. अगर आपके हाथ में कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में, ये मेरे पास मेरे हाथ में फोन है, उसका एक फोर्स होगा विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो ग्रेविटेशनल पुल के नाम से होता है, राइट? सो दैट इज अ फोर्स. द वेट exerts a force, ठीक है ना? And it will be measured in newtons. So yeah, weight is a vector. These are the tons of differences we have with mass and weight. You can write this: mass is a vector quantity, weight is a scalar quantity. You can write this: mass is the amount of matter in an object, weight is the force exerted by that object. So yeah, these are the two differences. आगे चलते हैं. C. A boat pulls the water skier to the right with a horizontal force of 50 newtons. So for example, this is the water skier, and on it is exerted 50 newtons of force. 50 newtons. एंड विच इज द फोर्स है, जो फोर्स है वो किससे क्रिएट हो रहा है? दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम द बोट पुलिंग इट. जो बोट पुल कर रही है उसकी वजह से 50 न्यूटन ऑफ फोर्स इज बीइंग क्रिएटेड. द वाटर स्कीयर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. इट इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्सेस. Explain in terms of the horizontal force why the speed is constant. Why is the speed constant? It is constant because the forward force is equal to the backward force. 50 newtons backward force भी create हो रहा होगा, and therefore there is no resultant force. And as we know, for there to be a resultant, for there to be an acceleration, there needs to be a resultant force. ठीक है ना? Since there is no resultant force, there is no acceleration. According to the formula, F is equals to ma, Newton's third law. ठीक है ना? So you can write that the forces are cancelled out. The forward force is due to the boat pulling the skier, while the backward force is the friction. और अगर आपको एक और फोर्स नजर आ रहा हो which is in the opposing direction. Friction and air resistance are two forces which are opposite to the motion in body in motion. ठीक है ना? So yeah, while the backward force is friction and air resistance. So those are the two backward forces. So you can write that as well. अगर आपने छोटा लिखना है, you can write the forces are balanced. 50 newtons of force is balanced by the friction and the air resistance. So yeah, that is a smaller answer. अच्छा आगे. 2. The horizontal force acting on the right increases from 50 to 70. So the force is increasing and there is a resultant force of 20 newtons right now. The sizes of any forces are unchanged. Calculate the acceleration of the water skier. The acceleration of the water skier will be calculated. How? It will be calculated using the formula F is equals to ma. अगर आप इसकी extension देखें, it will be forward minus backward force is equals to mass into acceleration. आपको मैंने इनिशियली क्या बताया था? फॉरवर्ड फोर्स हो गई है 70 न्यूटन. इनिशियली द बैकवर्ड फोर्स एंड फॉरवर्ड फोर्स वर इक्वल. मतलब जो बैकवर्ड था वो फॉरवर्ड था. दैट इज व्हाई द रिजल्टेंट फोर्स वर जीरो. बट नाउ जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज सर्टेन वैल्यू, बिकॉज जो फॉरवर्ड फोर्स है that has increased from 50 to 70, while the backward force, the force of air resistance and friction, has changed have not changed and they have remained
from 50 to 50, right? और जो mass है that has not changed, of course the mass is still 60, and the acceleration is the value we have to find out. So we have been given 20, 70 minus 50 is 20, is equals to 60 into acceleration. So 20 divided by 60 will be the answer, which is 0.333 meters per second square. So yeah, hopefully that is the answer. And yeah, that is question number one. चलो जी आगे देखते हैं. Figure 2.1 show the long cardboard tube sealed at both ends which contains many small pieces of metal. The tube is turned vertically so that the pieces of metal fall from one end to the other. तो जो tube है that is been placed like this. Vertically placed कर दिया हमने tube को. ठीक है ना? The temperature of the pieces rise, increase as a result of falling. During the fall, the gravitational potential energy of the metal piece is transferred to one other to other forms of energy. State two forms of energy to which the gravitational potential energy is transferred. सबसे पहले हम सबसे ऑब्वियस वाले की बात करेंगे. सबसे ऑब्वियस वाला जो होगा दैट विल बी फ्रिक्शन, या यू कैन से कि काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपनी ट्यूब को वर्टिकल करोगे देन ऑफ कोर्स आपका जो पार्टिकल है, जो मेटल पीस है दैट विल एक्सेलरेट ड्यू टू द gravitational pull, and when it accelerates it will start to speed up, and as we know, if a particle speeds up it will have some sort of kinetic energy. So we can say kinetic energy में turn हो रहा है. Second, अगर जो पार्टिकल्स जो इसकी ट्यूब की बाउंड्रीज है उनके साथ हिट होता हुआ नीचे जाएगा, उनके साथ रब होता हुआ नीचे जाएगा, ऑफ कोर्स दैट विल प्रोड्यूस हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन. आप अपना हाथ ले, अपना बाजू लें और अपने बाजू पे अपनी उंगलियां वो करें, रब करें. what will happen is that you will feel heat that is caused by friction. So you can say heat as well. एंड अगर आपके पास आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा दैट इफ यू शेक, वो इंस्ट्रूमेंट को अगर आप शेक करो दैट प्रोड्यूसेस साउंड बिकॉज इट हैज बीड्स इनसाइड इट. तो दिस क्यूब इज साउंड काइंड ऑफ लाइक दैट. यू कैन ऑल्सो से साउंड एनर्जी. ठीक है ना? सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनर्जीज बीइंग प्रोड्यूस्ड. अच्छा आगे. The pieces fall on average 1.2 meters during one turn. The total mass of the metal pieces 150 ग्राम. हमें उसका डिस्टेंस पता है कि कितना फॉल करता है और हमें पता चल गया उसका मास कितना है. कैलकुलेट द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑफ द पीसेस एज दे फॉल वंस. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G is 10 newtons per kilogram. So we have been given the distance, we have been given the mass, we have the gravitational field strength, and we have to find the GPE or the gravitational potential energy. This is a mad easy question for 2 marks. So M हमारे पास होगा 0.15 because we have to turn the 150 grams into kilograms. 0.15 into M into G which is 10 or into H which is 1.2. This will give us the GPE which is 1.8 joules. So yeah, mad easy. 2 सेकंड का क्वेश्चन था. We have to use the formula M GH is equals to GPE. आगे चलते हैं. आगे, a student turns the tube quickly after the small metal pieces have fallen from one end to the other 80 times. So वो बहुत vigorously उसको shake कर रहा है and it is like producing a lot of heat. Their temperature has increased by 7 degrees Celsius. Determine the specific heat capacity of the metal. The specific heat capacity will be calculated using Q is equals to MC delta T. Delta T means the change in temperature. Q हमारे पास निकालने वाला है. Actually नहीं. C is specific heat capacity. Q है हमारे पास 1.8. अच्छा, हमने Q जो है ना वो हमने निकालना है calculating it by multiplying 1.8 joules into 80 because that is the amount of energy produced once, right?
That is the amount of energy produced once. 1.8 joules is the amount of energy produced once. What if you repeat the process 80 times? So that will be 1.8 into 80, which will be 144. 144 joules is equals to math हमारे पास क्या है 0.15 into C into delta T which is 7. तो अगर हम ये करें 144 divided by 0.15 divided by 7. What will we get? We'll get 137 joules per kilogram centigrade. 137, or we can round it off to 140 joules per kg centigrade. ठीक है ना? So that is the specific heat capacity of this metal. The student repeats the experiment, turning the tube more slowly. Suggest what will happen. Suggest why a different temperature increase is obtained. That is because there will be more time for the heat loss. ठीक है ना? And it will have more time for the metal to cool down. ठीक है ना? So yeah, the tube will heat up and the friction with the tube will increase. And less kinetic energy will be produced. Less kinetic energy because the tube is being turned more slowly. That is why less kinetic energy will be like produced. So yeah, आगे चलते हैं. Question number 3. Figure 3.1 shows a syringe mounted vertically in a block of wood and sealed at one end. So it is sealed at one end so that none of the air escapes. A plunger is free to move inside the syringe. The plunger is free to move depending on what the outward pressure is and the inward pressure. Inward pressure is plunger को afloat रख रहा है. The pressure is why the plunger is not falling down. ठीक है ना? There is trapped air inside the syringe. The air inside the syringe exerts the pressure on the wall of the syringe. ठीक है ना? We have to define what the term pressure means. The term pressure can be summarized with the formula pressure is equals to force divided by area, or you can write pressure force per unit area. It's the same thing. So yeah, let's move on. Explain how the air molecules in the cylinder of the syringe create a pressure. So I will tell you in 3 steps or 3 different explanations. क्योंकि ये 3 marks का question है, we cannot just write 1 mark का explanation. So yeah. So first of all, the gas molecules are in constant constant motion and in all directions. The gas molecules are in constant motion and in all directions. As we know, जो gas होती है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है. It does and in a straight line, है ना? So yeah, as the particles will move, they will collide with the inner surface of the cylinder's walls. As the air particles move, they will collide with the inner surfaces of the syringe, right? And lastly, each time a particle hits the plunger, इस plunger को hit करेगा, plunger, it exerts a force on it.
तो अब मैं इसको समराइज करके लिख दिया है। जो ये है नहीं ट्रैप्ड एयर, इसके अंदर ना पार्टिकल्स हैं, राइट, एयर के पार्टिकल्स हैं। एंड जो एयर के पार्टिकल्स हैं दोज आर इन कांस्टेंट मोशन, एंड when they are in the constant motion, the air particles will move and they will collide with the inner surfaces of syringe, right? They will collide with the inner surfaces of syringe, and each time the particle hits the plunger, it will exert the force on it. It will exert, मतलब यहाँ से एक particle आ रहा है, it will hit the plunger, it will go the other way, but the force was exerted in this way. Therefore, it will keep the plunger up. So yeah, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, you have to go in detail. आगे चलते हैं. A 10 न्यूटन weight is placed on top of the plunger. अच्छा, यहाँ प्लंजर है हमारा और इस प्लंजर के ऊपर हमने रख दिया वेट, तो ऑफ कोर्स प्लंजर जाएगा नीचे, है ना. तो आगे पढ़ते हैं. The plunger moves down slowly so that the temperature of the air inside the syringe does not change. Before the weight is placed on top of the plunger, the pressure of the air inside this syringe is 1 into 10 raised to the power of 5 pascals. The volume is 50 centimeter cube. The cross-sectional area of the plunger is 1.2 into 10 raised to the power of minus 4. The cross-sectional area will be the circular or whatever the shape of the cross-sectional area is, like this. ठीक है ना. So yeah, we have to calculate the pressure of the air in the syringe after the plunger stops moving. After the plunger stops moving, we all know that the pressure is increased, because when the plunger will go down, the plunger is going down, right? It will create a smaller volume. And as we know, as the volume decreases, the pressure increases, because more particles are fit into that specific small space. So yeah, calculate the pressure. We have to calculate the pressure. तो हमने देखना है, पहले पहले से हमारे पास है 1.0 into 10 raised to the power of 5 pascals, and we have to calculate the excess pressure, जो pressure अभी produce हुआ है by the placing of the 10 Newton weight on top of the plunger. So that will be calculated using the formula pressure is equals to force divided by area. Force is 10 and the area is 1.2 into 10 raised to the power of minus 4. If you do the math, you will get an answer of 83,333.333 pascals. ठीक है ना? But that will not be the lone, what you call it, pressure. That this pressure will be added to the previous pressure that was already present inside the syringe. तो 100,000 प्लस कर देंगे हम 83,333. So that will be 183,333 pascals. We can round that off to 180,000. So yeah, pretty easy question. Calculate the volume of air inside the syringe after the plunger stops moving. We can calculate that using the formula P1 V1 is equals to P2 V2. P1 हमारे पास कितना है 100,000 into V1 हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब. 50. P2 हमारे पास कितना है 183,333 into V2 हमने निकालना है. So let's calculate that. 100,000 into 50 divided by 18,3333. So that will give us 27 centimeter cube of volume. The new volume found will be 27 centimeter cube. आगे चलते हैं. अच्छा, question number 4 now. Figure 4.1 shows a ray of white light incident on a glass prism. As the white light incidents on the glass prism, it will become the component colors. ठीक है ना? Refraction causes the light to separate into different colors. Define the term of refraction. Angle of refraction. The angle of refraction will be the angle made between the normal and the refracted ray. अगर ये हमने normal बना दिया ना, this is the normal
So angle made between the normal and the refracted ray. This will be the angle of refraction for violet, and this will be the angle of refraction for red. The angle between the refracted ray and the normal. So yeah, ये हम लिख लेते हैं. Angle formed between the refracted ray and the normal. So let's move on. B. The angle of incidence for of the white light as it enters the prism is 40 degrees, and the angle of refraction for the red light is 25 degrees. Calculate the refractive index of the glass for red light. Show your working. So for this we're going to use the formula n is equals to sine I divided by sine R. ठीक है ना? n is equals to sine I हमारे पास क्या होगा? Sine 40 divided by sine 25. Do the math. So yeah, if you do the math, you'll get an answer of n is equals to 1.521. 1.521 को अगर हमने round off करना हो, that will be rounded off to 1.5, and that will be our answer. Let's move on. Using figure 4.1, state and explain how the refractive index for the red light differs from the refractive index of the violet light. The refractive index primarily decides what the एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी. जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. समझ आ गई? द मोर द आई मीन द लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो या, जितना कम एंगल व्हाट डू यू कॉल इट, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. And in this case it is for red in this case. और आगे आगे हम एक और चीज नोटिस करें कि the angle of the refractive index determines what the how much the light will bend. ठीक है ना? How much the ray will bend is dependent on the refractive index. अच्छा, अब मैं entirely new answer लिख रहा हूँ. The refractive index for red light is lower than the refractive index of indigo है ना दूसरा कलर. वायलेट. ठीक है ना? ये हमने लिख दिया है. आगे जो डिफरेंस है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेक्स अ डिफरेंस. हाउ? अभी आपको मैंने बताया रेड का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रेड विल इट विल बेंड लेस, और वायलेट का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वायलेट विल बेंड मोर. ठीक है ना? वी कैन राइट आल्सो दिस द डिफरेंस in refractive index will determine how much the bending will be. इसके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होने की वजह से व्हाइट लाइट टर्न्स इनटू कॉम्पोनेंट कलर्स. दैट इज व्हाई इट इज टर्निंग इनटू कॉम्पोनेंट कलर्स, बिकॉज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट कलर्स का, दे आर डिफरेंट. सो या, आगे चलते हैं. The sources, the source of white light used in figure 4.1 produces other electromagnetic radiation as well as visible light. State the name of the visible radiation found at P and the visible radiation found at Q. At P we can see, अगर हमने P में देखना हो, it is higher than red or violet. So it could generally be infrared. और जो Q है that is lower than violet.
So I think it's ultraviolet. So yeah, those are the two. ये ऐसे लिख देती हूँ. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A student connects a battery, thermistor X and resistor Y in parallel as shown in figure 5.1. This is the battery. ये thermistor X है और ये resistor Y है in parallel to that. So electromotive force EMF of the battery is E. The current in X is I. The resistance of Y is greater than the resistance of X. Take two boxes, one to show the correct statement about the potential difference across Y and the other to show the correct statement about the current in X, Y. The potential difference across Y. The potential difference across Y will be, first of all, जितना यहाँ से आएगा potential difference across Y and the potential difference across X will be the same. Let's assume यहाँ से 12 volts आ रहा है. 12 volts यहाँ से आ रहा है. यहाँ भी 12 volts जाएगा और यहाँ भी 12 volts जाएगा. That's how it goes in parallel. As opposed to अगर ये सीरीज में लगे होते, अगर सीरीज में लगे होते तो यहाँ थोड़ा सा ड्रॉप होता और यहाँ थोड़ा सा ड्रॉप होता है. बट सिंस दे आर इन पैरेलल, it is the same in every turn. So yeah, we can write same equal to the current. The current in Y. अच्छा, तो बेसिकली ना जो करंट होता है ना इन व्हाट डू यू कॉल इट पैरेलल, इट डिवाइड्स. द करंट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट द रेजिस्टेंस इज. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट होगा बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम होगा. ठीक है ना. करंट कम होगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. तो Y में हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो दैट विल ऑटोमेटिकली मीन के करंट कम है. तो इट इज लेस देन I. फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सेकंड ऑफ ऑल आई टेल यू वन मोर थिंग बट आई थिंक आगे जाके बताना ज्यादा जरूरी होगा. आगे. The student connects thermistor X in series with the resistor Y and a battery of EMF 6 volts as shown in figure 5.2. तो ये हमें अब सीरीज में नजर आ रहा है. सीरीज में डाल दिया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में थर्मिस्टर और रेजिस्टर दोनों लगा दिए हैं. At room temperature, the resistance of thermistor X is 600 ohms and the current in thermistor X is 2 ampere, 0.002 ampere. So as we know के in series, the current will stay the same across the whole circuit. The current will not change. So yeah, that is another fact. So because like उन्होंने बोला हुआ है ना in thermistor X, that is just to confuse you. समझ आ गई. तो अब पावर निकालनी है. पावर हम निकाल लेंगे. P पावर इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. पावर इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. तो करंट हमारे पास है 0.002. इसका हम स्क्वायर लेंगे into resistance and that I have already calculated which is 0.0024 watts. 0.0024 watts. So yeah. आगे चलते हैं. Calculate the resistance Y. For us to calculate the resistance Y, first we'll have to calculate how much resistance the X has consumed, how much voltage the X has consumed. बिकॉज हमारे पास स्ट्रेट अवे तो पता ही नहीं है कि एक्स में कितनी वोल्टेज यूज हो रही है और वाई में कितनी वोल्टेज यूज हो रही है. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वोल्टेज एक्स हैज कंज्यूम्ड. तो फॉर दैट वील हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर. वी हमने निकालना है. आई इज 0.002 इंटू आर हमारे पास 600 है. And if we calculate that, we'll get V as 1.2. तो 1.2 volts यूज हो रहे हैं across this. 1.2 volts. अगर 1.2 volts ये खा गया तो बाकी 4.8 volts इसके लिए बचे होंगे है ना. तो यहाँ 4.8 volts आ जाएंगे. I can mathematically prove that as well by the total voltage
माइनस 1.2 विल गिव अस 4.8 वोल्ट्स। तो 4.8 वोल्ट्स को हम अप्लाई कर देंगे अब दूसरी फॉर्मूला के अंदर। 4.8 इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, फिर से लगाएंगे बट इन अ डिफरेंट सेटिंग। इस टाइम हमारे पास वोल्टेज है लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। आई हमारे पास 0.002 और आर हमने निकालना है। तो विद दैट we'll get let's check 4.8 divided by 0.002, that will give us 2400 ohms. 2400 ohms will be the answer. So yeah, 3 marks. So the resistance has increased. So what happens when the resistance will increase here? यहाँ पे जो 4.8 previously voltage यूज हो रही थी, that will not stay the same, right? यहाँ पे अब कम वोल्टेज यूज होगी बिकॉज अब इसको भी वोल्टेज चाहिए। पहले सिर्फ इसको 1.2 चाहिए थी और इसको 4.8 चाहिए थी, दे वर लिविंग इन हार्मनी। बट ये आके अब कहता है आई नीड मोर वोल्टेज बिकॉज माई रेजिस्टेंस इज मोर। तो ये अब आके अपना फर्दर हक मांग रहा है। तो या यहाँ पे वोल्टेज कम होएगी और यहाँ पे इंक्रीज होएगी। रेजिस्टेंस जो आई हैव लाइक एक्सप्लेन मेनी टाइम्स, रेजिस्टेंस इज लाइक भूख एंड वोल्टेज इज लाइक खाना। जिसको जितना चाहिए होगा वो उतना लेगा और बाकी दूसरे वाले के पास चला जाएगा, राइट? तो या proportionately. So what will happen is that the resistance across x is increased, therefore it will require more voltage, in turn making the voltage in y reduce. ठीक है ना? सो याद आस्ती आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Okay, lastly, question number 6. Figure 6.1 shows a part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. तो ये ऊपर एक मैग्नेट है और एक नीचे मैग्नेट है। The plastic rod passes through the center of the both the magnets. Both magnets के बीच में एक plastic rod है to keep them aligned with each other. The top magnet can move up and down freely around the plastic rod. The magnetic poles on the bottom magnets are shown in figure 6.1. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. On figure 6.1, mark the poles on the top magnet and explain why it floats in the air above the bottom magnet. अच्छा, जो poles हम बनाएंगे, since it is floating, that must mean there is a force of repulsion between them, right? Since they are floating, I will repeat it once again. Since they are floating, there must be a force of repulsion between both of them. ठीक है ना? And for repulsion to be possible, both of the facing sides should be the same pole. जब same poles होते हैं, they repel each other. And when there are unlike poles, they attract each other. So in this case, they are repelling each other. Therefore, the poles must be same. So yeah, नीचे आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, ऊपर साउथ लिख लेते हैं। ऊपर साउथ लिख लें यार, कोई फायदा नहीं है लेकिन। एंड एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं लाइक poles repel each other and that is why the top magnet is afloat. ठीक है ना? So yeah, you can write that. आगे चलते हैं। The top magnet is replaced with a ring made of iron. Explain why the iron sticks to the bottom of the magnet. अगर आपने कोई बचपन में मैग्नेट लिया हो तो वो जगह जगह जाके आप चिपकाते हो ना, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। द अदर थिंग बिकम्स मैग्नेट एज वेल। ठीक है ना? व्हेन यू ब्रिंग द आयरन नियर द मैग्नेट, जब आप आयरन को मैग्नेट के पास रखते हो, द आयरन बिकम्स मैग्नेटाइज्ड बाय द इंडक्शन टेम्परेरीली।
जब आप आयरन को मैग्नेट के पास लाते हो, द आयरन बिकम्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। आयरन जल्दी से थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे मैग्नेट बन जाता है। एंड द बॉटम पोल्स ऑफ द आयरन विल बी साउथ, एंड जो बॉटम मैग्नेट के अपर पोल्स हैं दोज आर नॉर्थ, so they will be attracting each other. ठीक है ना? So we can write when the iron is brought near the brought near the, what do you call it, when the iron is brought near the magnet, the bottom magnet लिख लेते हैं, bottom magnet, the iron temporarily becomes a magnet due to induction. ठीक है ना? It temporarily becomes a magnet due to induction. The bottom poles of iron must be, what poles must the iron have for it to be attracted towards the bottom magnet? बॉटम मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होने के लिए आयरन के क्या पोल्स होने चाहिए ऑन द लोअर साइड? द आयरन शुड हैव साउथ पोल एट द लोअर साइड. आयरन मस्ट बी साउथ. ठीक है ना? सो या, लेट्स मूव ऑन. बी, a wire carrying a current passes at a right angle through the piece of paper. Figure 6.2 shows a cross and circle where the current is in the wire passes into the plane paper. तो ये हमें वायर दी हुई है. On figure 6.2, sketch three magnetic fields to show the magnetic field pattern around the wire. Show the direction of your field on your sketch. तो हमने इसकी बनाने three magnetic field lines. So as we know, it is a piece of paper, so we're gonna make the magnetic field lines, and those are gonna be circular. समझ आ गई? Those are gonna be circular. It is going into the paper, and the magnetic field lines are gonna be circular. तो या आगे हम बना लेते हैं इनको थोड़ा प्रिसाइसली. एंड लास्टली ये, एंड यूजिंग द राइट हैंड फर्स्ट रूल, लाइक राइट हैंड रूल अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो every circle is more distant than the last circle. Every circle is more distant than the last circle because as we move away from the wire, the magnetic field lines will be more stretched apart because जो उसकी strength है that is reducing. The strength is reducing, therefore the lines will have more distance between them. So yeah, three things you have to keep in mind. Lines are circular around the wire. Second one will be using the right hand rule, determine the direction, which will be clockwise in this specific question. And the third one will be every magfield line will have greater distance since the strength is reducing as the
बस ये लिख दें as the strength is reducing. So yeah, question 7. Figure 7.1 shows the speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road. तो एक गाड़ी जा रही है एक straight horizontal road. This doesn't look straight but it is. तो yeah, हमने उसकी speed time graph को describe करना है. We have to describe the motion of the car. तो in order for us to do that, पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीन जो हिस्से हैं इनको हम ना सेपरेट कर देते हैं और हम इस क्वेश्चन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और हर हिस्से का हमें मिलेगा एक मार्क. हर हिस्से का हमें एक मार्क मिलेगा. सो या, लेट्स नेम दिस सेक्शन ए, दिस विल बी सेक्शन बी एंड दिस विल बी सेक्शन सी. तो सेक्शन ए में क्या हो रहा है, सेक्शन ए में एज वी कैन सी द कार accelerates from rest to a maximum value of 16 meters per second for the velocity in a 10-second period. अच्छा, in actually for the first 10 seconds, the car accelerates. For the first 10 seconds, the car accelerates and reaches reaches a maximum value for the velocity of 16 meters per second. 16 meters per second तक गाड़ी एक्सेलरेट करती है एंड आफ्टर दैट इट रीचेज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, अब लिख देते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 seconds, or we can write from 10 to 20 seconds, the car maintains that value of 16 meters per second for the velocity. ठीक है ना, that and travels at a constant velocity. Well, you can write either one. और लिख देते हैं, इसी जगह और लिख देते हैं, और travels at a constant velocity. You can write either one. ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. दिस इज द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट विल बी फॉर द नेक्स्ट 4 seconds. यहां से यहां तक 4 seconds बन रहा है, 4 seconds. और यू कैन राइट फ्रॉम 20 to 24 seconds the car decelerates till it comes to rest. मतलब जब तक वो रुक नहीं जाती तब तक वो डिसेलरेट हो जाएगी. So yeah, you can write that. So I think that is a very explanatory question. I mean an answer. तो या, आगे चलते हैं. 2. Using figure 7.1, calculate the distance traveled by the car during the 24 seconds of its motion. अच्छा, तो बेसिकली हमने स्पीड टाइम ग्राफ से डिटरमिन करना है इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड. वो हम कैसे करेंगे? In order to deduce the distance from a speed time graph, we need to get the area under the graph. तो in order to get the distance from a speed time graph हमने ये सारा एरिया निकाल लेना है. ठीक है ना. So I'm writing it down for your own like benefit कि आपको समझ आता जाए. तो आपने इसका एरिया निकालना है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका एरिया कैसे निकालना है. आप खुद सोचें आप इसका एरिया कैसे निकालोगे. आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर आप इस दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालो. वी कैन डू दैट. तो या,
ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? तो या लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। 1/2 इंटू बेस हमारी क्या है? बेस इज 10 इंटू हाइट हमारी कितनी है? इट इज 16, सो दैट विल बी 80, ठीक है ना? दैट विल बी 80 मीटर्स। अब हम निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एज वी नो 10 इंटू कर देंगे 16, इट्स प्रीटी इजी। तो या 160 meters ये हो गया। एंड लास्टली we'll have to get the area for this small triangle as well. That will be 1/2 into base which is 20 to 24. तो हम 4 ले लेंगे, 24 minus 20 will be 4 into height which is 16. So I think it's 32 meters. Yes. और अगर हम इस सबको ऐड कर देंगे 32 plus 160 plus 80 will get the total distance. So that will be 272 meters. So yeah, very simple. It is the easiest marks you can get, in my opinion. Easiest. But make sure that you only apply this on the speed time graph. For any other graph, this will not be valid. Calculate the average speed of the car during its motion. The average speed of the car will be calculated using the formula average speed is equals to total time divided by, sorry, total distance divided by total time. Very, very simple. This is the second easiest question. So yeah, this is very easy as well. So average speed will be calculated by total distance divided by total time. Total distance हमारे पास था 272, 272, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम के साथ विच विल बी 24, तो वी कैन गेट द टोटल, आई मीन द एवरेज स्पीड। तो दैट विल गिव अस 11.333 meters per second. So yeah. अच्छा, a second car travels at a steady speed. It travels the same distance as the first car in the 24 seconds of the journey. On figure 7.1, draw the speed time graph for the second car. So वो हमें बोल रहा है कि we have to draw the speed time graph for the second car. What the second car is doing के 0 सेकंड से, मतलब शुरू से ही सेकंड कार एक कांस्टेंट स्पीड पे है and it travels the same amount of distance as the first car. But from the first second, it is traveling at a constant speed. And that constant speed must be 11.333 meters per second. हम इसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं by using the formula, ठीक है ना? By using the formula, speed is equal to distance divided by time. What they are saying is that the time is 24 seconds. Time हमें दिया हुआ है 24 seconds और distance हमें दिया हुआ है it travels the same distance. तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 272 as well. So we can calculate it using the formula speed is equal to distance over time. But अगर आप नोटिस करें, अगर आप गौर करें, तो we have already calculated that and the value is 11.333. So अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो तो you can simply deduce कि आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो in order to make a straight line across the whole graph and it needs to look something like this. तो पहले हम देख लेते हैं कि 11.33 कहाँ है। तो this is gonna be each small division will be 0.8, I think के 4 divided by 5 is 0.8. तो ये हो जाएगा 8.8, 8.8 के बाद 9.6, ये हो जाएगा 10.4 एंड 10.4 के बाद ये 11.2 हो जाएगा, ठीक है ना? 11.2 के थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो ये पॉइंट होगा हमारे पास और हम इस पॉइंट से बना देंगे एक लाइन हमने खींच देनी है which is straight from the 0 seconds. So yeah, we have gotten the 2 marks as well. This was a comparatively tricky question. तो अब आगे चलते हैं हम. The part B of the question.
The thinking distance is the distance traveled by the car between the time that a hazard is seen and the time that the brakes are applied. जो thinking distance होगा ना, हमारा जो thinking distance होता है, it is the distance a car travel or a vehicle travels driving, है ना? अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो और आपको आगे कोई चीज नजर आ जाती है, आपको आगे कोई हैजर्ड नजर आ जाता है, आपको आगे कोई बच्चा नजर आ जाता है, तो आपने पहले वो परसीव करना है कि वो बच्चा आपके सामने है, सो यू हैव टू ब्रेक। आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि वो बच्चा आपके सामने है। ठीक है ना? जो डिस्टेंस आप कवर करते हो ड्यूरिंग दैट थिंकिंग पीरियड इज द थिंकिंग डिस्टेंस। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल while द कार स्लोज डाउन टू रेस्ट। अच्छा, आपने आगे देख लिया है, आप यहां हो, आपने यहां देख लिया है एक बच्चा है, आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है थिंकिंग डिस्टेंस में, सोचने में कि बच्चा आ गया तो आई हैव टू स्टॉप। फिर आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है फॉर अस टू स्टॉप, फॉर अस टू स्टॉप। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो और आगे आपने एक स्पीड ब्रेकर देखा है, या आगे आपने एक स्टॉप साइन देखा है, या आगे आपने कोई पुलिस ऑफिसर देख लिया है, वो आपको रोक रहा है, तो यू हैव टू स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप इन ऑर्डर फॉर अस टू लाइक रीच दैट पुलिस ऑफिसर। तो द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू स्टॉप विल बी द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो फिगर 7.1 हमें दिखा रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस, एंड इट इज शोइंग अस द ब्रेकिंग एंड थिंकिंग डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है ना? अब हमने डिटरमिन करना है कि क्या क्या आगे हमने करना है, वट एवर। कंप्लीट द टेबल 7.1। अच्छा जी, हमने 7.1 को कंप्लीट करना है। अच्छा, 7.1 में सिर्फ द हाली स्पॉट, द ओनली हाली स्पॉट इज द थिंकिंग डिस्टेंस की थर्ड स्लॉट। ठीक है ना? उसमें हमें नजर आ रहा है कि पहले 9 था थिंकिंग डिस्टेंस, फिर 18 हुआ है, फिर हो गया एक्स अमाउंट ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस, फिर हो गया 36, फिर 45। एज वी कैन सी अ ट्रेंड हियर। पहले 9 हुआ है, 9 माइनस 18 विल बी 9। ठीक है ना? फिर हुआ एक्स, फिर हुआ 36, 36 माइनस 45 इज 9। सो वी कैन सी अ ट्रेंड कि हर दफा 9 इंक्रीज हो रहा है, तो 18 प्लस 9 विल बी 27। तो 27 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपका थिंकिंग टाइम होता है ना, द टाइम यू टेक टू थिंक इट डज नॉट चेंज इन एनी सिचुएशन। आपने हर सिचुएशन में सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सोचना है। ठीक है ना? द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज योर स्पीड, द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज योर स्पीड। तो द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू थिंक डज नॉट चेंज बट योर स्पीड डज। ठीक है ना? सो अगर आप एक ज्यादा स्पीड पे होगे तो द डिस्टेंस इट टेक्स फॉर यू टू प्रोसेस दैट थॉट विल बी मोर। तो या, लेट्स मूव ऑन एंड या, लेट्स डू पार्ट टू। The time it takes for the driver to react to the hazard at a constant speed. Explain how this table shows this. अच्छा, तो बेसिकली हमें थिंकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है और ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमने बताना है कि द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्राइवर टू रिएक्ट टू द हैजर्ड इज कांस्टेंट। ये हम सिंपली कैसे वो कर सकते हैं, व्हाट यू कॉल इट, डिटरमिन, कैलकुलेट। ये हम कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड हमारे पास है, पहले वाली की कर लेते हैं, पहले वाली की हम कर लेते हैं। स्पीड है हमारे पास 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 9 डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ कीप इन माइंड के वी हैव टू प्रूव के द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अस टू थिंक इज द सेम इन एवरी सिचुएशन। तो इधर हमारा टाइम ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 20। 9 डिवाइडेड बाय 20 will equal to 0.45 seconds. So for the first one, it takes us 0.45 seconds to think. आगे देखते हैं, 18 कर लेते हैं अब हम। 40 is equals to 18 divided by time. Let's do the same thing. Time ऊपर चला जाएगा और
40 नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 40. 18 divided by 40 will be equal to 0.45 seconds. तो 0.45 seconds हमें फिर से वही आंसर मिल रहा है. आप खुद ही सोचें कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हो और यू हैव अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर और आप आगे एक चीज देखते हो, फॉर यू टू परसीव, फॉर यू टू थिंक कि वो चीज आगे खड़ी हुई है, इट डज नॉट टेक यू अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम. आपको सेम टाइम लगता है फॉर यू टू थिंक दैट. द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज द स्पीड यू आर ट्रेवलिंग एट. ठीक है ना. अगर आपका जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, तो इट विल टेक यू मोर डिस्टेंस for your thought to process, right? So yeah, these are the two calculations I have made, or you can say that each increase of 20 kilometers an hour result in a change of 9 meters increase in thinking distance. Each increase of 20 kilometers an hour will increase the thinking distance by 9 meters. The thinking distance is proportional to speed. ठीक है ना. So yeah, आगे चलते हैं. State what happens to the thinking distance and the braking distance when the driver is tired. जब ड्राइवर थक जाता है. अच्छा, जब आप थके होगे ना, तो आपको जो सोचने में टाइम लगता है दैट इज इंक्रीज्ड, है ना. आपको जो सोचने में टाइम लगेगा दैट विल बी इंक्रीज. तो लोगों की ना कॉग्निटिव एबिलिटीज चेंज हो जाती हैं एज यू गेट स्लीपी. आपको जो डिसीजन होते हैं लेने में टाइम ज्यादा लगता है, आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता. जो थिंकिंग डिस्टेंस होगा दैट विल बी इंक्रीज. ठीक है ना. इट विल बी इंक्रीज बिकॉज आपको सोचने में टाइम ज्यादा लग रहा है ना. तो ये इंक्रीज हो जाएगा. बट while the braking distance will not be changed, not change, because once you think, जब आप सोच लेते हो कि आपने ब्रेक लगानी है, you still gonna apply the same amount of pressure on the brake in order for us to stop, है ना. तो the braking distance will not change while the thinking distance will change. So yeah, that is gonna be it for the long ride of question number 7. I hope you understood that. अगर आपको नहीं समझ आया, make sure to comment and I will 110% reply to you in the comments. एंड एक और चीज, आई हैव अ शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के जो मेरे टॉपिकल पास पेपर्स है ना, दोज आर आउट. अगर आपको टॉपिकल क्वेश्चंस करने में, आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर करने में मुश्किल हो रही है, तो यू कैन चेक आउट माई टॉपिकल पास पेपर्स. वो मैंने भला क्या किया है, मैंने अपने टॉपिकल पास पेपर्स बनाए, मतलब अपने टॉपिकल पास पेपर्स कंपाइल किए हैं, और उन पे हर वीडियो पे ना सिक्वेंशली एक, हर क्वेश्चन पे एक सिक्वेंशली वीडियो बनाई हुई है मैंने. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन 1 है ना, तो इस क्वेश्चन 1 के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, उसके साथ भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. तो यू वोंट एवर हैव टू वरी अबाउट नॉट नोइंग द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. So yeah, having that said, let's move on to question number 8. A. Figure 8.1 shows a ripple tank and the crest of the water wave that is produced in it. तो ये हमें ripple tank दिया हुआ है and these are the crest of the water waves. Crest क्या होता है? For example, ये आप समुंदर में हो and these are the waves you see. है ना, ऐसी ही होती है ना waves. So this will be the crest. तो yeah, the frequency of the water wave is 2 hertz and its amplitude is 3 millimeter. Calculate the number of crests produced in 1.5 seconds. Crest होता क्या है? So this is the crest. और अगर आप एक दूसरी ये crest लिया आपने और आप ये crest ले लो, that will be a wavelength. तो indirectly they are asking how many wavelengths have been produced. The number of wavelengths produced. Wavelength होती क्या है? Wavelength is two identical points from adjacent waves.
ठीक है ना? इट विल बी द टू आइडेंटिकल पॉइंट्स, मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट ले लें इस वेव पे और दूसरी वेव पे भी यही वाला पॉइंट ले लें, दैट विल स्टिल बी वन वेवलेंथ. तो या लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब हमने लगाना है एक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ क्रेस्ट्स, ए द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रोड्यूस्ड इन दैट टाइम पीरियड. तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम. फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है और टाइम हमारे पास 1.5 है. तो 1.5 इंटू 2 विल बी 3. 3 will be the number of waves produced. आगे, the height of the wave is measured from the level of the undisturbed surface. मतलब जो mean point होता है, this is the mean point, जो बीच में एक लाइन कट कर रही है the upper portion and the lower portion को. The height of the wave at one point is zero at time t is equals to zero. तो वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे वेव की हाइट जीरो है. तो हम यहां से यहां तक एक लंबी लाइन खींच देते हैं विच विल बी द मीन पॉइंट. Draw a graph to show how the height of the wave at this point varies with time. So basically, what information do we have? We have the information that the amplitude of the waves will be 3, it will be 3 millimeters. तो यहाँ नीचे 3 जाएगा और ऊपर 3 जाएगा. The second information we have is that the total time is 1.5 and in that amount of time 3 waves produce हुई हैं. तो ध्यान से सुने, टोटल टाइम है हमारे पास 1.5 सेकेंड और उस 1.5 सेकेंड में हमारे पास 3 वेव्स क्रिएट हुई हैं. एक वेव होगी हमारे पास ऐसी, दूसरी वेव होगी हमारे पास ये और तीसरी वेव होगी हमारे पास ये. सो दैट इज हाउ इट विल बी ड्रॉन. सो या वी हैव टू ड्रॉ दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ 3 waves. सो हर एक वेव जो प्रोड्यूस होगी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर वन हाफ ऑफ अ सेकेंड. ठीक है ना, हाफ ऑफ अ सेकेंड. तो यहां से हम यहां तक ऊपर जाएंगे, फिर यहां से नीचे आएंगे, फिर यहां से नीचे आएंगे और यहां से ऊपर जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट विल बी हियर. एक सेकेंड, ये हम एक बना लेते हैं एक. फर्स्ट पॉइंट विल बी हियर. द सेकेंड पॉइंट विल बी अराउंड एट द 0.125 मार्क. 0.125 मार्क होना चाहिए एंड इट शुड बी इन कोऑर्डिनेट्स विद द हाइट. तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट. और फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा बैक एट द मीन पॉइंट. मीन लाइन पे तीसरा पॉइंट आएगा और उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट आएगा इन द नेगेटिव. तो ये हम चले जाते हैं विद द 3.75 वाला मार्क विच विल बी अराउंड हियर. और उसके बाद चौथा आ जाएगा यहाँ. so that you can see will make a perfect wave. अच्छा, लेट्स रिपीट द प्रोसेस. ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया है विच विल बी अराउंड हियर. अगला इससे यहाँ, उससे अगला हमारे पास आ गया है यहाँ. एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट मेकिंग एस्टिमेट्स. ठीक है ना? सो आप अपना बहुत केयरफुली करना. सो ये हमारे पास आ गया 3 के 3 waves. So yeah, if you join these together, you'll get a very good symphony of waves. So yeah, आप मैं अभी इनको join नहीं करा because I don't have the stability to join them with my mouse. So yeah, if you join them, they will become 3 like good looking waves. चलो जी आगे चलते हैं. B1, the frequency of the wave is increased. Describe how the apparatus shown in figure 8.1 is adjusted so that the frequency of the wave increase. So basically जो हमारे पास वुडन बार है ना, वुडन बार ना ऊपर नीचे जाता है. ये फॉर एग्जांपल वुडन बार है एंड इट गोज अप एंड डाउन टू प्रोड्यूस वेव्स. मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्रिएटिंग वेव्स.
और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ये ऊपर नीचे जाएगा उतनी ज्यादा वेव्स क्रिएट होंगी. सो व्हाट कैन वी राइट? सिंस द वुडन बार इज क्रिएटिंग द वेव्स, एक सेकेंड, since the wooden bar is creating the waves, so if we move it more frequently, it will increase the frequency. So जो भी है मेरी गंदी मंदी इंग्लिश है, आपको जो समझ आ रही है वही मैं वही मेरा मीनिंग है. तो जितनी जल्दी जल्दी आप उस वुडन बार को ऊपर नीचे करोगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी होती ही क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका एक स्टूडेंट है और आप उसको 10 सेकंड में 5 दफा चपेड़े मार रहे. फ्रीक्वेंसी विल बी द फ्रीक्वेंसी विल बी द अमाउंट ऑफ चपेड़े आप मार रहे हो उसको पर सेकंड. तो इन दिस केस आई एम स्लैपिंग हिम 0.5 टाइम्स पर सेकंड. अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, मैं 20 दफा उसको चपेड़े मार रहा हूं पर 10 सेकेंड, सो दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट विल बी 2 slaps per second. सो या दैट इज फ्रीक्वेंसी इन सिंपल लैंग्वेज. चलो जी आगे चलते हैं. स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. सो जो स्पीड होती है ना, द स्पीड इज primarily dependent on what? Dependent on the change in medium. जब तक एक मीडियम में चेंज नहीं आता ना तब तक स्पीड भी चेंज नहीं होती. ठीक है ना? एंड एज वी कैन सी दे डू नॉट मेंशन अ चेंज इन मीडियम, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन स्पीड. तो हम क्या कर सकते हैं? स्पीड, एक सेकेंड, स्पीड इन अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मीडियम remains constant. ठीक है ना? यू कैन राइट दैट. और आपने लिख देना है, इस जैसे कांस्टेंट लिख देना है. सो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द स्पीड स्टेज द सेम व्हेन देयर इजंट अ चेंज ऑफ स्टेट्स. ये भी लिख देते हैं. सो एज द फ्रीक्वेंसी चेंजेस देयर इजंट अ चेंज in speed because the medium is constant. The medium isn't changing, therefore the speed isn't changing. But if the frequency increases, the wavelength will decrease. If the frequency increases, the wavelength will decrease. Because अगर आपका जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है दैट इज नॉट चेंजिंग और आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ को डिक्रीज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट द इक्वेशन. तो लेट्स मेंशन दैट इक्वेशन दैट इज गोना बी v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा. ठीक है ना? अगर हम लैम फ्रीक्वेंसी को हम सब्जेक्ट बना दें तो दैट विल लीव अस विद v इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे in order for us to balance out the equation we'll have to decrease the lambda, decrease the denominator in order to make a balanced equation. तो या अब हम क्या लिखेंगे? स्पीड विल remain constant while wavelength will go like in an inversely proportional relationship. Wavelength अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी. So the wavelength is decreasing. अच्छा, the apparatus shown in figure 8.1 can be used to demonstrate refraction. State the additional apparatus needed to demonstrate refraction. That can be a glass block. तो यार आगे चलते हैं. Draw on figure 8.3 to show the refraction of the wavelength wave water wave. Label a boundary
वेयर द रिफ्रैक्शन अकर्स। तो बेसिकली मैंने एक P1 से डायग्राम उठाया है और P1 से डायग्राम दिखा रहे हैं कि एक डीप वाटर से शैलो में जा रहे हैं हम, डीप से शैलो में जा रहे हैं हम लोग। एंड या एज यू कैन सी के देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन क्या हो रहा है? पहले आपकी जो डायरेक्शन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट चेंजेस टू हेयर। तो अगर हम एक नॉर्मल बना दे तो वी कैन इजीली सी के व्हेन इट रिफ्रैक्ट्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू मेक दैट विल नीड टू मेक अ बाउंड्री, और बाउंड्री will make it something like, let's make it something like this। ठीक है ना, एंड पहले हम ये कर लेते हैं कि इट इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, सो डोंट वरी, आई वोंट वेस्ट योर टाइम। सो या पहले हमने ऐसे बना ली, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बेंड इट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो विल हैव टू बेंड इट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमने कर दिया। एक सेकेंड, पहले हम ये बना लेते हैं ऐसे, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर हम ये कर रहे हैं ऐसे, और फिर ये, और फिर ये। द द डायग्राम कुड हैव बीन बेटर बट सिंस we're on a टाइम शॉर्टेज, मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। यू कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, अगर आप इसको ऐसे कर दो एंड यू लाइक, एक सेकेंड, ये कर दो, फिर ये कर दो, और उसके बाद आप एक और लाइन बना लो। ठीक है ना, और आप इसको फिर ये कर दो, फिर आप इसको ऐसे कर दो, और या यू गेट द पॉइंट राइट, यू गेट द पॉइंट। सो या समथिंग लाइक दैट where the direction changes so that the so that it looks like it is moving towards the normal. So yeah, let's move on. D. Figure 8.4 shows a connection to the Earth made from a remote station A using a satellite above the Earth's surface. Data is sent between station A and station B using microwaves which travel to and from the satellite. Station B is connected directly to the internet using optic fiber. ठीक है ना? The microwaves is, of course, we know. The station A and B are each 560 kilometers. So what he is saying is कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 560 किलोमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 560 किलोमीटर अगेन है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस विल बी 560 plus 560. So that will be 1120. Calculate the time taken for data to travel from A to B. So basically what they're saying is, I'll explain it to you in a bit of detail. So for example, this is your Earth, this is your this is your station, और आपने यहाँ से डेटा भेजा है, यहाँ से आपने डेटा भेजा है, एंड यहाँ आपने उसको पहुंचाना है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे, टोटल डिस्टेंस लोगे, एंड we have the speed as well, so we can calculate the time. So yeah, speed is equals to distance divided by time. Speed है हमारे पास 300,000 300,000, एक सेकेंड सॉरी, किलोमीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस है हमारे पास 1120 किलोमीटर्स। So we can easily apply the formula by rearranging this equation.
इफ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन टू मेक टाइम द सब्जेक्ट, आपने जब भी कोई वैल्यू निकालनी है ना, उसका आपने जो गिवन वेरिएबल है उसको आपने क्या करना है, उसको सब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट बना दिए, टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल गिव अस द टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 1120 है, टाइम स्पीड हमारे पास है 300,000। दैट विल गिव अस अ time of 0.0037 seconds. So that will be the easy answer. This is very easy for 3 marks. अच्छा जी, skip that ऊपर वाला part. State one property that the infrared waves and microwaves have in common. Very easy. They are both transverse, both in electromagnetic spectrum. ठीक है ना, ये भी हम लिख सकते हैं. They are both transverse. Yeah, many differences. Very easy question. Again, 3 का 1 mark मिल रहा है. Suggest one other advantage of using optical fiber to connect stations A and B directly. अच्छा, it can give greater security, higher. अच्छा, जो more bandwidth लिख देते हैं rather than that. Bandwidth ये भी लिख सकते हैं. जो satellites होते हैं, those are exponentially more expensive. Satellites, I don't know this. एक सेकेंड. Satellites are exponentially more expensive than fiber. ठीक है ना? So yeah, that is gonna be it for question number 8. So let's move on to question number 9. Okay, lastly, the last question number 9. Thorium-229 is a radioactive isotope in several medical applications that involve beta and alpha particles. During ionization, a helium atom becomes a helium ion. It has lost a electron as shown in the diagram. State how the structure of a helium atom differs from a structure of a helium ion. It differs in a way that the helium atom is neutral. And a helium atom will be neutral because it has the same amount of protons and electrons. Helium atom is neutral. Helium ion, on the other hand, is positively charged because it has more protons than electrons. अच्छा जी, charge. So yeah, let's move on. 2. State how the structure of an alpha particle differs from a structure of a helium ion. जो alpha particle होता है ना, it primarily looks like the core of a helium atom. Yeah, ion. It looks like the nucleus of the helium atom. मतलब दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स होते हैं. While the helium ion has 1 electron, the alpha particle has 0 electrons. Helium ion has 1 electron, alpha particle has none. So the alpha particle पे charge होगा, it will be +2. ये लिख लेते हैं, +2 चार्ज. और जो हीलियम आयन पे होगा दैट विल बी +1 चार्ज. So yeah, you can just write that, any of the two. चलो जी आगे चलते हैं. 3. A nucleus of thorium-229 decays by an alpha emission to a nucleus of an element X. पहले इसके ऊपर alpha emission हो रही है. The nucleus of X then decays to Y.
और उसके ऊपर फिर बीटा एमिशन हो रही है. सो आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशंस. Actually, let's just remove them. I was just doing it to like confirm my answer. तो पहले अल्फा एमिशन हो रही है, फिर जो प्रोडक्ट आया उसके ऊपर बीटा एमिशन हो रही है. So they are asking us to tell us the final number of protons and neutrons. So first of all, अगर थोरियम 229 में से अल्फा एमिशन हुई है, तो हम ऊपर वाले से माइनस कर देते, नीचे वाले से माइनस कर देते. तो 229 माइनस 4 विल बी 225. तो ऊपर आ जाएगा 225. नीचे 229, नीचे 225, ऊपर 225 हो गया, नीचे आ जाएगा 90 माइनस 2, तो 88 हो जाएगा नीचे. अच्छा ये हो गया. अच्छा जब बीटा एमिट होगा ना, तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा होगा और एक न्यूट्रॉन कम होगा. ठीक है ना. Whenever a beta emission takes place, the proton number goes up by one while the neutron reduces by one. So if the neutron reduces and the proton increases, we can tell that there is no change in the atomic mass, while there is a change in the atomic number, and the atomic number will go up by one. तो y का प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 89. x का प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 88. और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर. मास नंबर 225 हो गया माइनस एटॉमिक नंबर 88 हो गया, दैट विल बी 137. इसका 137 आ गया है न्यूट्रॉन्स, और x के प्रोटॉन्स है 88. अगर हमने y के प्रोटॉन्स निकालने, दैट विल बी 89. एंड अगर हमने y का न्यूट्रॉन निकालना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड द सेम वे, 225 माइनस 89. So that will give us 136. You don't need to mention the calculations, you just need to write the answer. So yeah, that is 4 marks. Like 4, 5, 6, 6 marks easily मिल गए हमें, like without any effort. आगे चलते हैं. B. Experiments can show that a sample of a material is radioactive. Describe the apparatus and procedure used to show that a sample of both alpha particles and beta particles. So we have to show that a radioactive sample है हमारे पास. ये हमारे पास radioactive sample है, and we have to show that it emits both alpha and beta particles. You may draw a diagram of the apparatus you as you wish. अच्छा, so first of all we have to draw what the sorry we have to draw what the radioactive sample will be like. Radioactive sample जो हमेशा बनाते हैं हम, that is always covered in a lead shielding. ठीक है ना. लेड से कवर्ड होता है. सो ये हमने ये बना दिया है, और हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बना देते हैं. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या सैंपल. ठीक है ना. ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल हो गया. चलो रेडिएशन डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमारा सैंपल तो आ गया. डिटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? डिटेक्शन के लिए हम यूज करेंगे जीएम ट्यूब. डिटेक्शन के लिए हमारे पास यूज होगा जीएम ट्यूब. जीएम ट्यूब को ऐसे बना सकते हैं, यू कैन सिंपली मेक अ बॉक्स एंड नेम इट जीएम ट्यूब. जीएम ट्यूब. जीएम ट्यूब गाइगर मुलर ट्यूब होती है. ठीक है ना, एज यू माइट नो. अच्छा अब हमने टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट हमने ऐसे करना है कि एज वी नो कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर गोना बी स्टॉप्ड बाय अ पीस ऑफ पेपर. अच्छा लिख लेते हैं. द अल्फा पार्टिकल्स विल बी स्टॉप बाय a sheet of paper. So in order to like क्या कहते हैं, detect
detect the presence of alpha particles. Particles. Just place paper between sample and GM tube. Just place the paper between the sample and the GM tube. Just imagine if this is a paper. If the count goes down, that ensures we have alpha emission. So yeah, तो या हमारे पास अल्फा एमिशंस के लिए तो आ गया है। अब बीटा एमिशंस के लिए हम क्या करें? बीटा एमिशंस को तो नहीं पेपर रोक सकता। बीटा एमिशंस के लिए हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम। सो द सेम थिंग विल बी व्हाट डू यू कॉल इट रिपीटेड। बीटा लिख देते हैं इसकी जगह। विल बी स्टॉर्ड बाय शीट ऑफ या एल्यूमिनियम लिख देते हैं एल्यूमिनियम। So in order to detect the presence of beta particles, just place aluminum between sample and GM tube. If the count goes down, that ensures we have beta emission. So yeah, so we have to do the same thing with the beta particles, but the difference will be that we'll place a piece of aluminum between them instead of a piece of paper for the alpha, because alpha की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है दैट इज लेस देन द बीटा पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अल्फा। सो या स्टेट व्हाट इज meant by the half life of thorium. The half life, the time it takes for the radioactive nuclei to have। ठीक है ना, ये लिख देना बस काफी है। A sample of pure thorium 229 contains 4 into 10 raised to the power of 14 atoms after 22,000 years. The number of atoms of thorium 229 in the sample is 5 into 10 raised to the power of 13. Determine the half-life. Achha, in order to determine the half-life, we need to figure out how many halves, how many cycle of halves has the sample gone through. पहले हमारे पास थे 4 into 10 raised to the power of 14 atoms. और अब हमारे पास बच गए हैं 5 into 10 raised to the power of 13 atoms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 into 10 raised to the power of 14 को डिवाइड करेंगे until we get a value of 5 into 10 raised to the power of 13. So 4 divided by 2, that will be 2 divided by 2, that will be 1, and divided by, acha, we'll have to go through 3 halves until we get to 5 into 10 raised to the power of 30. ये पहले हुआ 2, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 5 into 10 raised to the power of 13. तो 3 हाफ। और मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ years divided by half life is equal to number of halves। तो हमारे पास नंबर ऑफ years कितने हैं? 22,000। हाफ लाइफ निकालनी है और नंबर ऑफ हाफ्स कितने हैं? 3। तो या अगर हम ये कर दें, इसको रीअरेंज कर दें, तो 22,000 divided by 3 is equals to 7,300 years। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें। अच्छा, इफ यू वांट दिस इन एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो चेक माय टॉपिकल वीडियोस आउट। टॉपिकल पास पेपर्स पे वीडियोस भी बनाई हुई है मैंने, सो यू कैन गो चेक देम आउट एंड होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर आपको कोई मुश्किलात आ रही है इन अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप मेरे टॉपिकल्स देख के उस टॉपिक को स्पेसिफिकली मतलब बार बार उसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको इवेंचुअली आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो या that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Subscribe, like, comment,
comment if you have any questions, queries, or whatever, any like future questions, whatever you want to ask, just comment. I will surely message back. So yeah, that's gonna be it. Have a great day. Like, subscribe, whatever. Allah Hafiz.